Hello students. In previous part 3, I have discussed about the 1-1 mapping, that is injective mapping, and many-one function. Now I am going to tell you about onto function or surjective mapping. Onto function or surjective mapping. A function f a to b is said to be onto function if all the elements of codomain B are the image of some elements of domain A. कहने का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी फंक्शन एफ ए टू बी जो है वो ऑन टू उस समय कहलाता है जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट, कोडोमेन बी के सभी एलिमेंट डोमेन ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो. दस एफ ए टू बी इज सर्जेक्टिव इफ फॉर एवरी, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर एवरी, बी बिलोंगिंग टू कोडोमेन बी, बी कोई एलिमेंट है कोडोमेन बी का, देयर एग्जिस्ट, जिसके लिए एग्जिस्ट होता है सम, कोई एक ए बिलोंगिंग टू सेट ए, डोमेन ए, कोई ए डोमेन ए में होता है सच दैट एफ ए इक्वल बी, यानी ए की एफ इमेज बी होती है. इन जनरल इफ रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए उस केस में फंक्शन एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है. मतलब क्या है बेटा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो, इमेज अवश्य हो. जैसे डायग्राम रूप में देखिए आप, डायग्रामेटिकली ऑन टू फंक्शन कैन बी शोन एज, सी हियर देयर आर टू सेट्स, सेट ए containing a b c, set b containing 1 2 3 and f1. थर्ड रूल f1, a की इमेज 1, b की इमेज 2, c की इमेज 3. ठीक है ना. 1 2 3 all the elements of codomain B are image of some element of domain A. In second part also all the elements of codomain B are image of some elements of domain A. Here are some examples. We have to discuss the surjectivity of the following function. But for this we have to know about into function also. A function f a to b is said to be into function if at least one element of codomain B is not the image of एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए. कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन कब होगा जब कोडोमेन बी का कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है देन इट इज इनटू फंक्शन एंड वाइस वर्सा. अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टे ही बात कि अगर कोई फंक्शन इनटू नहीं है तो वो ऑन टू होगा. यानी दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन. ठीक है. अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी is not the image of any element of domain A under the rule F. डायग्राम रूप में here set A, A B C, set B 1 2 3 4. 1 is image of A under F1, 2 is image of B under F1, 3 is image of C under F1. But here 4 is not the image of any one, any of the element of domain. Here also 3 is not the image of any of the element of domain A. So these functions are into functions. Now we will discuss about the surjectivity of the function. For surjectivity we have to focus upon this codomain. Here are
एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1 आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन एफ है जो कि डिफाइन है 2x प्लस 1। आर की कोई भी वैल्यू रखेंगे यानी कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो 2x प्लस 1 एक रियल नंबर अवश्य आएगा, यानी एवरी रियल नंबर इज इमेज ऑफ सम रियल नंबर इन द रूल 2x plus 1. In this second example, fn to n. Here if we put n equal 1, 2 1 are 2 plus 1 3. That means 1 and 2 are not the image of any n under the rule f. 1 and 2 is not the image of any n under the rule f. So this function is not onto function. So this function is into function. Here another example, f r to r positive. As we know that e to the power x, the graph of e to the power x goes from real number, whole real number like this shape, and the least value of e to the power x is greater than 0. यानी all positive real number is image of some real number under this rule fx equal e to power x. Now consider this one r. If we put r equal 1, 1 का स्क्वायर 1, 1.1 का स्क्वायर 1.21, that means in between 1 to 1.21 no any real number is image of r. It may be some element but not all the elements. So this rule, this function fx equal x square is not onto function, because if we have put any negative real number, the square of any negative real number is positive real. So no any negative real is the image of any real number under the rule fx equal x square. So this function is also into function, not onto function. Here constant function. A function f(a) to b is said to be constant function if all the elements of domain A having the same f image in codomain B. अगर किसी फंक्शन में डोमेन के सभी एलिमेंट की कोडोमेन में सेम इमेज हो तो उस फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. हियर आर द टू डायग्राम्स. इन डोमेन ए बी सी कोडोमेन 1 is image of A under f1, 1 is image of B also under f1, 1 is image of C also under f1. So 1 is the image of all the elements of domain. So this function is into a constant function. This function is also constant function. So here are some key points you have to note in your mind also. First one, if a function is even power of variable x, that is fx equal x square, fx equal x to power 4, etc., etc., from r to r, then function is into function. And if a function is odd power of x, variable x, from r to r, is always onto function. If a function is both 1 1 and onto, that means holding the property of both 1 1 function, that means injectivity mapping, and onto function, that is subjectivity mapping, then function is said to be bijective function. The only condition for a function to be bijective function, that the function must be 1 1 function and onto function. A bijective function is said to be invertible function,
non-singular function, and bi-uniform function. So in this session I have discussed about onto function, into function, constant function, and bijectivity of the function. In the next session I will discuss more about these things. Till then, bye.